सुंदर को एक बार नोटिस डाल दीजिए उस पे, अगर वक्त नहीं आया। डाल दीजिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिए। अच्छा, डाल दीजिए, धन्यवाद। ठीक है, हम प्रारंभ करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले बार जब आप पुणे में थे तो हम चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान के अनेक ऐश्वर्यपूर्ण जो लीला प्रदर्शन है, जैसे हमने वामन देव और वराह देव और मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा करी थी। तो कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, अपने ऐश्वर्यशील लीलाएं दिखा के उनका संरक्षण करते हैं, कैसे उनको उनकी महिमा भक्तों के समर्पण की के गुणगान गाने के लिए जैसे बलि महाराज ने उनको समर्पित किया। ये भगवान भक्तों के साथ प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। तो अभी हम वहां से आगे बढ़ेंगे और राधा शंभू का लेक्चर सुनते सुनते बीच में डिस्कस भी करेंगे। In the same manner, the Lord, all of them, Lord, with 5, Lord, Padaya Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So the picture you all are seeing is, this is Dwarkadish, Lord, with 5 Patrani, the chief queens of Krishna, Rukmini, Satyabhama, Mitravinda, Satya, Bhadra, all of them. In the Vedanta Sutra, it is said that the absolute truth is a bhandar of rasas. Bhandar actually means like a reservoir of various loving mellows. And with different jivas, the Lord reciprocates affection differently as per their inclination to deal with Him. Just like, for example, you have a vatsalya towards your mother and father, and you have a brotherly, with a brother you have a friendly relationship. In the same manner, the Lord also, different jivas actually want to deal with Him in different ways. Somebody wants to have Lord as their son, like Yashoda and Nanda, correct? No? Like Arjuna type of living entities want to have Lord as their friend. Hanuman type of living entities, they want to have Lord as their master. So in that particular mood, they receive greatest joy. Like here you see, this is Lord Narayana and Vaikuntha. Here are residing all those living entities who are very fond of accepting Lakshmi and Narayana as their Swami and Swamini. For them, they have deep reverence and respect. Like in our temple, we have Balaji. You can see how he is worshipped. He's like a father of the whole universe. Not just one universe, millions of universes. Isn't it?
is dealt with. Therefore, yesterday I showed you that Vishwarupa Darshana also video. You can see that all the Panchamahabhutas come from him. All the 33 crore devatas are sheltered in him. And he creates the universes and maintains them, destroys them repeatedly, and puts living beings in different bodies. He accompanies them as super soul. So he's a very powerful personality. The Supreme Lord. Actually, he doesn't have to come in front of you for you to know his power, because you can see the things he has created. That itself is enough evidence for us to understand how powerful he is. Correct, no? Jnana, Shakti, Teja, Bala, Virya. In this way, there are various opulences I'll show you later on. Different opulences of our Lord which are visible in this creation. Like if you go to the planetarium also, they show you the scientists. Recently, our children went to the BMS school, they went to one of the planetariums. So one of the lead scientists was telling that what we know is very little, they're saying. This much we are saying, and there is much more than this, which we are still researching on. So huge planets with so much minutest details, replete with living forms and so many facilities and amenities. So there are one class of living beings who are amazed in awe and reverence for the Lord, and they only want to see him as a master, like a mother and father. In that mood, they are very satisfied. That you see here in Narayana and Vaikuntha. Yesterday I showed you. अभी तक क्या चर्चा किया है राधेशंपू ने? राधेशंपू बता रहे थे कि कैसे वेदांत सूत्र बताते हैं रसो वही सह, रसो वही सह, जहाँ पे भगवान भंडार हैं सभी रसों के, अनेक तरीके से भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान करते हैं उनकी इच्छा अनुसार। उनकी इच्छा अनुसार मतलब जैसे हनुमान जी दास के रूप में भगवान को एक स्वामी के रूप में देखते हैं और अपने आप को एक दास के रूप में देखते हैं, तो उनको सबसे खुशी ज़्यादा इसमें ही मिलती है कि मेरे को वो दास के रूप में स्वीकार करें। और सेवा तो सभी करते हैं, जैसे यशोदा मैया भी सेवा करती हैं, वो भी एक तरीके से उनकी सेविका ही हैं भगवान की, लेकिन उनका भाव कैसा है? वात्सल्य भाव है। ऐसे ही कुछ किन्हीं का भाई की तरह, जैसे बलराम जी का भाई की तरह रस है, तो उसको उनका सखा थोड़ा साख्य रस रहता है। तो ऐसे अनेक रसों के अंदर जो जीवात्मा हैं उनके साथ भगवान आदान प्रदान करके उनको खुशी देते हैं और भगवान भी आनंद का अनुभव करते हैं। तो अभी राधेशंपू ने एक चित्र दिखाया जिसके अंदर भगवान वैकुंठ लोक में नारायण विराज्य हैं और उनके साथ लक्ष्मी जी हैं और अनेक जो प्राणी हैं वहाँ पे, जो जितने भी आत्माएं हैं वो वहाँ पे भगवान को ऐश्वर्यशील रूप में देखते हैं। तो भगवान बहुत ही महान है, भगवान बहुत पराक्रमी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत उनके तेजस है, बहुत ओजस है, बहुत सारे दिव्य गुण हैं। तो उन दिव्य गुणों को देखने से, उनकी शक्तियों को देखने से जो भक्त हैं ये वैकुंठ लोक में उनको ऐश्वर्यशील भाव में देखते हैं। ऐश्वर्यशील भाव मतलब कि बहुत महान है भगवान और हम तो उनके दास ही बन सकते हैं। तो ये एक इस ऐश्वर्यशील भाव से भगवान की आराधना करते हैं, इस तरह वहाँ पे पूजा होती है। और राधेशंपू बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि भगवान को अपने पराक्रम को दिखाने के लिए स्वयं को प्रकट करना पड़ेगा। यहाँ पे भले ही विश्वरूप वगैरह दिखाया था अर्जुन को, लेकिन भगवान को ये सब हमारे को दिखाने का जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो भी सृष्टि में रचनाएं हुई हैं, इतनी विविधता है इसके अंदर, इतने सारे प्राणियों का संरक्षण और पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। तो भगवान बहुत ही महान, बहुत ही शक्तिशाली है और इसको देखने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनके ऐश्वर्य की तरफ उनका नतमस्तक हो सकता है, वो उसका सिर झुक जाता है कि भगवान आप इतने महान हैं। तो ऐसे प्राणी फिर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। तो वैकुंठ लोक में ऐसे ही भगवान को ऐश्वर्यशील भाव से देखते हैं। ये आगे देखते हैं। So here you see Balaji. Recently we had gone for darshan of Balaji on
one of the days. So you will find Balaji is so not only the richest lord in the entire world, but is also very, very popular. Even after making computer receipts and computer invitations to the temple, like nowadays they give you a timing, correct, no? In which you have to come. Still you have to wait for 4 to 5 hours, minimum. But imagine if there are no such arrangements, then people would wait for 20, 30 hours also, sometimes, in long queue. And even today, you find if you are going to go on Friday, Saturday, Sunday, you are gone. It's very difficult to get darshan. But even in the weekdays also, one of the weekdays we had gone, we had to wait for 4 to 5 hours to get this VVIP. Very, 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 very important personality. You can see the crowd on the top. You see here, isn't it? Such only heads you see here. Millions of people come. For the Brahmotsavam also, you will find there will be 10 lakh, 20 lakh people. Similarly, when the Lord is Jagannath in Jagannath Puri, there also, there are about 10 lakh people for the Rath Yatra. When there is Kumbh Mela celebrated once in 12 years, there are a few crores of people. There are sometimes 2, 3, 4 crores of people also, like that you find. So, the Lord dealt with great respect and worshipped, not only by the people. There are verses which glorify Balaji. You will find the Venkatesha Prabhatam, you will find. Kamalachu kachuchu kakunkumato niyatarunitadula nilatano kamalayatalochana lokapate vijayi bhava venkatashailavate sachaturmukha shanmukha panchamukha pramukha kila daivata maulimane sharanagata vatsala saranidhe paripalaya mam vrishashailavate. So I'll tell you one part of it. He's saying Sachaturmukha, Chaturmukha means Brahma. Shanmukha means who is Shanmukha? Shanmukha is 6 headed personalities. Kartikeya. 6 Kritikas protected the child. So it's called a Shanmukha. Sachaturmukha, Shanmukha, Panchamukha. Who is Panchamukha? That's Shiva. And Shiva Amsha is Hanuman. So he is also called Panchamukhi Hanuman. You know that? Yeah. Sachaturmukha, Shanmukha, Panchamukha, Pramukha, Akila Daivata Maulimani. Akila Pramukha means even other Pramukha people like Indra or like Kubera or like Yama, Varuna. These are all very Lokapalas, very powerful personalities. So all of them and many, many other devatas whose names are not mentioned here. Indra, Chandra, Varuna, Vayu, Agni. Like that you can go on adding their names. Yam, Brahma, Varunendra, Rudra, Maruta, Stunvanti, Divyastavai. Bhagavatam also says that. So all these people line up where? To Tirupati. He says they are coming to Tirupati for darshan of Lord Balaji, understanding him to be the master of the whole universe. So there's one particular verse which says this. There is one pond. सॉरी मैं भूल गया अनम्यूट करना. तो मैं कह रहा था कि कैसे भगवान, अभी क्या बताया प्रभु जी ने, कि कैसे बालाजी भगवान बहुत ऐश्वर्यशील हैं. तिरुपति बालाजी में भगवान का दर्शन लेने के लिए 4-5 घंटे खड़ा होना पड़ता है, टिकट लेने के बाद भी. और अगर दर्शन का टिकट ना हो तो कभी कभी 24 घंटे भी खड़ा होना होता है. तो ऐसे भगवान बहुत बड़े बड़े VVIP हैं, मतलब बहुत ही महान व्यक्ति हैं. और उनका क्षण भर के दर्शन के लिए भी हम लाइन में लगे हैं 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद दर्शन थोड़े 1 मिनट के लिए मिलता है. और ऐसा ही नहीं कि हम ही दर्शन के लिए खड़े हैं, हम ही उनका भगवान का दर्शन के लिए अनेक जो देवी देवता हैं उनके बारे में बता रहे थे राधेश्याम प्रभु. वो सुप्रभातम में आता है, वेंकटेश्वर सुप्रभातम में. और ऐसे अनेक श्लोक आते हैं जिसमें सारे देवी देवताएं जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं बालाजी का दर्शन लेने के लिए और लाइन में लगे रहते हैं. इस तरह भगवान का दर्शन 2 क्षण के लिए मिल जाए
उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ जाए। ऐसे भगवान बहुत महान है। जगन्नाथपुरी में भी हम देखते हैं कैसे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां भी आता है देवी देवता सब उनकी आराधना कर रहे हैं। हाँ, जयदेव गोस्वामी जी का वो जो बहुत सुंदर जगन्नाथ अष्टकम जो सॉन्ग है ना, उसके अंदर भी आता है कैसे गणेश और शिव और सभी, हाँ, शंभु, सब सब भगवान के, ब्रह्मा वगैरह सब भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी का ऐश्वर्य ऐसा रहता है कि रथ यात्रा में 10 लाख लोग आ जाते हैं, कोई पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं है, स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं पुणे के पास एक जगह है पंढरपुर, वहाँ पे विट्ठल देव हैं, विट्ठल कृष्ण ही हैं। तो विट्ठल कृष्ण के लिए लोग चल चल के 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चल के आते हैं, 20-25 दिन सब छुट्टी उट्टी लेके, सिर्फ एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन मिल जाए। बड़ी लाइन में खड़े रहते हैं, 48 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं भगवान का एक क्षण के लिए दर्शन के लिए। कम से कम 10-11 लाख लोग आते हैं, वो पंढरपुर में इकट्ठा होते हैं सब। तो सब जीवात्मा अपना जो भी कष्ट वगैरह उठाते हैं शरीर का, क्यों? क्योंकि उनको भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाए, भगवान इतने महान है। और ये सब के लिए कोई पोस्टर नहीं लगाता, कोई भी, कोई पर्चा है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, ये नहीं कि आपको ये मिलेगा सुविधा, आ जाओ आ जाओ। तो क्या महान है भगवान कि कुछ ना करे बिना भी भगवान के महान होने के कारण ही लोग उनके साथ उनका दर्शन लेने के लिए, उनको क्या मिल रहा है? उनको मिलता है भगवान की कृपा। तो भगवान के दर्शन ऐसे, भगवान इतने ऐश्वर्यशील हैं, भगवान इतने महान हैं, इतने गुणवान हैं कि सब जीवात्मा उनके आश्रय के लिए याचना करते हैं। तो ये भगवान की ऐसे अनेक महानता की लीलाएं हैं। अभी आगे देखते हैं। In Balaji temple, Pushkarani, you must have seen where the lotuses grow, huh? And they make garland. You can see here, if you see, this one is wearing big garland. You see, here they put the lotuses. Lotuses, they make this garland, big, beautiful one. So that pond, Brahma and Kumaras, they are all taking bath. And early morning with wet clothes, they are coming and standing just outside, like along with this crowd of people. Huh? Sometimes the devatas come in disguise. They come in the form of a brahmana, effulgent Brahman. Sometimes you may be thinking he's a Brahman coming for darshan, but they may be like Agnidev came as a Brahman in the Kandoprasa forest. You will see that. Sometimes they may come in their self-same forms also. They may come. So when they come and stand at the door, it is said, the Varavetra means the watchman with the sticks, like in Jagannath Puri, you must have seen the hit like this. You've seen that? They have the sticks. So they say, hey, don't push the door, move aside, move aside. And some of those stick beatings come on the head of Brahma and Kumaras also, it is said. Which is actually an indication that the darshan of the Lord is extremely, very, very, very rare. So that is said in one of the verses. Shri Swami Pushkaraniga Plava Nirmalanga Shreyortino Haravirincha Sanandanadhyaha Dware Vasanti Varavetra Hatottamanga Shri Venkata Achalapate Tava Suprabhatam. This is a verse. Dware Vasanti Varavetra Hatottamanga means they are beating, and that is coming on the head of even Brahma and Kumara. Still they don't want to leave that place, and they don't have any ego problems. Still they want to go and take darshan. He says. तो अभी राजा शंभू बता रहे हैं कैसे भगवान के दर्शन के लिए जब देवी देवता खड़े हुए हैं, वो अनेक ब्राह्मण वगैरह के रूप में आते हैं। हम सोचेंगे कि कोई ब्राह्मण आके दर्शन ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ब्रह्मा रुद्र वगैरह होंगे। और ऐसे वो लाइन में खड़े रहते हैं कि भगवान के 2 क्षण के लिए दर्शन मिल जाएं। और फिर उनको, जैसे पंडा लोग हमारे को पिटाई करते हैं ना, उनको डंडा मारते हैं, आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, तो उनको भी डंडा मारा जाता है। देवी देवता को भी डंडा मार देते हैं, वो तो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, लेकिन उनको भी डंडा मार के बोलते बाहर निकलो, चलो चलो। लेकिन फिर भी वो उत्सुक रहते हैं कि डंडा खाएंगे, लेकिन भगवान का दर्शन लेना जरूरी है हमारे लिए। तो कितने महान है जो ब्रह्मा इस सृष्टि करता है, और ऐसे रुद्र जो पूरे सृष्टि का संहार कर सकते हैं, वो भी लाइन में खड़े होके भगवान का दर्शन लेने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक श्लोक बताया वेंकटेश बालाजी का।
So now there are more people to catch and throw you in front of the Lord. In those days, there used to be one woman and one man. One woman for the Matajis and one man for Prabhujis. Now there are six people now. Because crowd is increased also. It's increasing day by day. So now what do you understand by all these things which we are talking now? The Lord is very big, is very great, and not easily approachable. That's what you understand. It's called Paratvam, we call it. He's very, very extraordinary Lord. And he. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये सब जो हम चर्चा किए, कि भगवान बहुत महान हैं और उनको प्राप्त करना आसान नहीं है. परत्वम मतलब भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है. His greatest personality. Just like in India also, you want to meet Prime Minister, is it very easy? And can any of you make a phone call and go and meet him? जैसे कि भारतवर्ष में क्या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिलना आसान है? नहीं, आसान नहीं है. कोई भी ऐसा फोन लगा के नहीं मिल सकता है. First of all, they will ask you, the office will ask you, why do you want to meet him? What is so important that you want to tell him? Because his time is very precious. Many of the people like Prime Ministers are 18 hours awake, you know that? Sometimes 17 hours, 18 hours they are awake. So they'll ask you, why do you want to meet him? First you put a petition, and in case you have done something very extraordinary, they will call you. Correct, no? And the meeting will be very long or short? Short meeting. That goes to show his importance, correct, no? In the same manner, when you go in front of the Lord, it's a short meeting, they catch you and throw you off, which means you can't get a very long appointment with the Lord. So अगर प्रधानमंत्री को मिलना है तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट के लिए अगर ऑफिस में फ़ोन भी किया, पहले पूछेंगे आपको काम क्या है, आपने क्या किया है, किस इतना बड़ा क्या चीज़ किया कि आपको प्रधानमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट मिल सकता है. तो जब आपका कोई बहुत ही अच्छा कुछ कार्य किया हो तभी आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट. और वो भी क्या लंबा नहीं मिलेगा, छोटा सा अपॉइंटमेंट मिलेगा. ऐसा बहुत लंबा समय नहीं ले सकते प्रधानमंत्री का, क्योंकि बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं वो, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो. तो इसी तरह भगवान के दर्शन लेने भी जाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उनके साथ. कितना समय मिलता है आपने देखा है ना, जगन्नाथ के पंडे भी आगे बढ़ा, चलो 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 चलो. हाँ, कितना समय ले सकते जगन्नाथ का हम तो कोशिश कर रहे थे. आपने तो देखा था हम कैसे हम भगवान का दर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि दर्शन मिले, इधर रुक गए उधर रुक गए लेकिन भगवान का दर्शन में ज़्यादा देर रुकना मुश्किल है, क्योंकि बड़े महान व्यक्ति के साथ मिलने जा रहे हैं हम, है ना. तो इस तरह भगवान की महानता के बारे में, परत्वम के बारे में, कैसे भगवान दुर्लभ हैं उसके बारे में पता चलता है. The Shastras say that although he is very, very great personality, not easy to approach, he has another aspect called Saulabhatvam, which means he also becomes easily available. I will tell you how he becomes easily available. I will tell you very soon. तो शास्त्र ये भी बताते हैं कि भगवान सिर्फ दुर्लभ ही नहीं है, सौलभत्वम भी है. परत्वम मतलब महानता, लेकिन भगवान बहुत सुलभ भी हैं. तो ऐसे दोनों चीज़ें बताते हैं भगवान के बारे में शास्त्र, कि दुर्लभ भी हैं और सौलभत्वम भी हैं. भगवान परत्वम है मतलब बहुत महान है, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत हमारे को प्रयत्न करना होता है. और सौलभत्वम भी बोला है, मतलब कि भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं. ये दोनों कैसे होते हैं अभी बताएंगे राजेश. Example is given of an elephant. The elephant sometimes you see is very tall. Imagine there are elephants even up to the height of this beam. There are huge elephants also. But no, nobody can climb on the top. But if the elephant sits down and with its trunk lifts you up and places you, then you can sit on the back of the elephant. Like that, the Lord sometimes comes in this world and kneels down himself and makes himself available. That's the meaning of Saulabhatvam. तो उपमा क्या दी गई है कि जैसे बहुत विशाल हाथी है कोई, तो उसके ऊपर चढ़ना तो असंभव है किसी के लिए, लेकिन अगर वो हाथी ही स्वयं बैठ जाए और हाथी स्वयं की सूंड से हमारे को उठाकर हमारे को अपने ऊपर बैठा ले, तो वैसा फिर भगवान उसी तरह महान होते हुए भी इस जगत में आते हैं और स्वयं को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करा देते हैं जीवात्मा को. उस तरह वो सौलभत्वम हो जाते हैं. Yeah. This question already is covered in the Smriti camp. Yes, Lord Krishna, avatar of Lord Vishnu. Again, I am just revising a few points here.
Spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. Yeah. Krishna is telling Arjuna, I only lie as Mahavishnu, and I am the source of all the universes, millions of universes I create. And I enter into them through my energy. And then through that I am able to make them run. And how does he do that? For example, तो अभी क्या बताते हैं, ये कृष्णा और विष्णु के बीच का संबंध समझा रहे हैं राधे शंभू। तो भगवान कृष्ण ही स्वयं अपने शक्तियों के द्वारा प्रवेश करते हैं सारे सृष्टि के अंदर, और वो ही विस्तार करते हैं विष्णु की तरह, ऐसे बता रहे हैं कृष्णा विष्णु अर्जुन को। say you have a TV. Now they have a remote, correct? No? You take a remote, then TV gets switched on. No? And then you change the channels without having to go near the TV. Correct? No? Same way you have a car key. Boop, like that you do, immediately car door opens. Correct? No? Somebody say, if man can do such remote things, can't Krishna do such remote thing with the planets? Is it very difficult for him? Or you have to teach him? Even your brain comes from him only. Correct? No? So he is saying that I reside in my own abode, Goloka, but I enter into these planets through my energies. And then remotely I control them. तो भगवान And how are the planets suspended in orbit? He says that. Well, one of the verses says, तो भगवान शक्तियों के द्वारा इस जगत में कार्य करते हैं, स्वयं नहीं आते हैं, स्वयं आने का जरूरत नहीं पड़ता इस सृष्टि के मैनेजमेंट के लिए। जैसे रिमोट कंट्रोल से हम टीवी को ऑन ऑफ कर लेते हैं या गाड़ी को खोल देते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं, तो अगर हम भौतिक प्राणी अगर ऐसा रिमोट बनाते हैं जैसे शक्ति के द्वारा ही हम उसको संचालित कर सकते हैं, स्वयं खुद से व्यक्तिगत रूप से ना जाना पड़े पास में, तो भगवान तो सारे शक्तियों के स्रोत हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? तो वो इस तरह अपने को गोलोक वृंदावन में रखते हुए ही यहाँ पे अपनी शक्तियों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं सारे कार्य। yes. What is that verse? Gamavishya bhutani dharayami. See, dharayami, he says, I am holding the planets, he is saying. Aham ojasa. Ojas means his Shakti. I have sent my Shaktis to hold the planets in the respective orbits. Otherwise, they will all become scattered away, he says. Just like here you see this manis in this Kantimala. They are all placed one after another nicely because there is a nylon thread. Correct, no? Sutre mani ganaiva, he says. You remove the thread, it will all get carried away. Like that he says. तो वो श्लोक बताते हैं धारयामी, तो धारयामी ओजस शक्ति से, भगवान की जो शक्तियां हैं उससे धारयामी, सारे जो सृष्टि के जो लोक हैं, सारे जो ग्रह हैं, उनको भगवान ने धारण किया हुआ है, भगवान पकड़े हुए हैं उसको। और अगर नहीं पकड़ेंगे भगवान अपनी ओजस शक्ति से, तो सारे जो ग्रह हैं वो सारे इधर उधर हो जाएंगे। जिस तरह मणि जो होते हैं हमारी कंठीमाला की, वो सारी कंठीमाला के जो धागा है उसके ऊपर पकड़ी हुई है, वरना सब बिखर जाएंगे। So now let us begin with this verse. Here you see Maha-Upanishad, it says, Eko vai Narayana asin, na Brahma, na Ishano, na Apo, na Agni, Samau, na Ime, Vyav, Aprativi, na Nakshatrani, na Surya. He says, the dawn of creation in this material world, Lord Narayana was only observed. Nobody else was there. That means he was lying and expanding universes. And then he says, na Brahma, even Brahma was not there. Because when Mahavishnu is lying, is Brahma there? When Brahma comes, when does he come? After the universe is created, within the universe is born to Garbhadaksha Vishnu. Therefore it says, na Brahma, na Ishano. The Rudras also have not come. Ishana means Shiva. Na Apo, there is no water. Na Agni, fire god is not created. In this way he says, Aprithvi, the Bhumi has not yet been created. Na Nakshatrani, like that he says, all these nakshatras are not created, Surya and Chandra, na Somo, Somo, na Ime. So he says that none of these things were there, only Mahavishnu was there, he says. And then after this verse in the same Upanishad, there's another verse which comes, Narayanat Brahma Jayate, it will say, from Narayana came Brahma eventually. Narayanat Prajapati Prajayate, Narayanat Indro Jayate, Narayanat Ekadasha Rudra Jayante, Narayanat Ashtavasvo Jayante, Narayanat Dvadasha Aditya, like that it goes on. That means from Narayana came Brahma, from Narayana came 11 Rudras, from Narayana came Prajapatis, from Narayana came
8 Vasus. From Narayana came Dwadasha Adityas. Like that it says another verses. Which means first no one is there, only Narayana is there. From Narayana everything else has come. Like that it says. See here. Narayana paro devas tasma jatas chaturmukha tasma rudro abhavad devaha sacha sarvajnatam gataha. Here it says Narayana Supreme Personal Godhead, and from him Brahma was born, and from Brahma's Bhukuti the 11 Rudras come out. तो अभी तक 2 श्लोक बताए हैं, उसके अंदर नारायण से ही सब कुछ आते हैं, सारे ब्रह्मा रुद्र सारे बाकी देवतागण नारायण ही स्रोत हैं सबके। नारायण से जब कोई भी नहीं था तब नारायण थे, ऐसा बताया। And this is what I told you. Narayana Brahma Jayate, Narayana Prajapati Prajayate, Narayana Indra Jayate, like that he says. From Narayana Indra is born, Vasus are born, Rudras are born, Adityas are born, all that he says. So now, we heard about Narayana till now. But we hear about 3 personalities, all 3 are called as Purushottama, correct, no? In the picture you see on the extreme left, Lakshmi Narayan. Middle you see Sitaram, worshipped and glorified by Hanuman. The extreme right you see Radha Krishna. तो अभी तक हमने नारायण के बारे में सुना, लेकिन हम पुरुषोत्तम जब शब्द यूज करते हैं तो 3 व्यक्तियों के बारे में शब्द ये सुनने को आता है। जैसे अगर हम बाई तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण है या विष्णु हैं, तो लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी नारायण ये बाई तरफ है। फिर बीच में सीताराम और दाई तरफ हैं राधा कृष्ण। तीनों के लिए पुरुषोत्तम शब्द यूज होता है। Now, what is the difference between these 3 Purushottamas? In Tattva, there is no difference. Chaitanya says that. If anybody says there is difference between these 3 Purushottamas, he is an atheist, he is a Pashanti, like the Lord Chaitanya says to Venkata Bhatta in South India, Srirangam. He told him, if one differentiates between Vishnu and Krishna and Rama and quarrels foolishly, they are only atheistic, like that he says, because these 3 are one person only, he says. But they have expanded into 3 forms. And there is a reason for that. We will see. तो इन तीनों के बीच में क्या फर्क है? तो कोई अगर तत्व के रूप से देखे तो सब ये तीनों पुरुष एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, वो एक ही व्यक्ति 3 तरीके से विस्तार किए हैं। तो तत्व रूप से देखने में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई बोलता है कि तत्व रूप से तीनों अलग हैं, तो फिर वो उसको पाषंडी बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। Now, although Narayana is existing in this world and creating all those things, Bhishma says Krishna is the original Vishnu in one of the verses. Here he says, you see. तो भले ही नारायण के बारे में बताया कि वो यहाँ पे पूरा सृष्टि का जो पालन करता है, लेकिन इधर बोला है कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है। देखिए वो श्लोक देखते हैं। येष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् माया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु. He is saying that Yesha vai, Yesha means he is showing the hand to Krishna standing here. Yesha vai Bhagavan Sakshat is the Bhagavan, means the possessor of 6 opulences. Sakshat means the original, he is saying. Adyo Narayana means what? Adi Narayana means is the original Narayana. All others are Xerox copies. They all have come later. That's the original copy and then Xerox copy, you say, no? Adyo Narayana Puman, he says. So, therefore, Krishna is called as a Poorna Purushottam. Now we will see why he is called Poorna Purushottam. So here Krishna is getting ready to depart for Dwaraka from Hastinapur. There is a very grand celebration here. तो आदि नारायण बोला है भगवान कृष्ण को, और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम ही बोला है। पुरुषोत्तम तो बोला है सबको, चाहे विष्णु हो और राम जी को भी, लेकिन इधर कृष्ण को क्या बोलते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम। क्यों बोला है देखते हैं। See, everybody is coming. Some of the women are weeping. You see, there's one old Mataji coming to our garland Krishna. Krishna is waiting to receive. And he even pays attention to the others who are wishing him with folded palms and playing instruments and band and everything. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान द्वारका नगरी के लिए जा रहे हैं हस्तिनापुर से। तो सारे जो वहाँ पे भक्त हैं, सब जीवात्मा वहाँ पे भगवान के भक्त हैं, सब आके भगवान
के विरह में रो रहे हैं, वहाँ पे पीछे माताएं रो रही हैं। एक माता, वृद्ध माता, उनके लिए गार्लैंड, उनके लिए माला चढ़ाने आ रही हैं, तो वो रुके हैं भगवान उनके लिए। और जो शहनाई बजा रहे हैं सब, अनेक तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, उनको उनके साथ भी आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भगवान सभी के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, पांडव वगैरह सब आए हैं, देखिए भगवान के भगवान को भगवान जब जा रहे हैं उनको उनके साथ आए हैं बाहर। So the Pandavas actually conducted a Rajasuya Yajna where they glorified Krishna by giving him the Agra Puja. Agra Puja is actually puja given for the topmost person in the entire universe. Krishna was given that puja. Even many demigods are present in that Rajasuya Yajna. And then when Krishna reaches Dwaraka, later on once Narada Muni visits Dwaraka. तो पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ भी किया था, और उस राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई थी। आपको शायद पता होगा कि कैसे वो शिशुपाल उससे बहुत ईर्ष्या करने लगा कि भगवान की क्यों पूजा हो रही है इधर। लेकिन अग्र पूजा उसको दी जाती है जो पूरे सृष्टि में सबसे महान व्यक्ति है, तो भगवान स्वयं ही है वो। तो भगवान कृष्ण को अग्र पूजा करी गई थी पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ में। और एक बार नारद मुनि पहुंच जाते हैं द्वारका नगरी, तो क्या देखते हैं देखिए। And most amazingly, you will find Krishna would get off from his Simhasan seat and he would go down the steps, welcome Narada and make Narada sit in his own asana, to make him sit. And he would wash his feet, he would bow down to him, and he will tell Narada, "Oh sage, you have sanctified my palace. For the householders, saintly persons come to their house, the house becomes sanctified." Like that Krishna would glorify. And Narada, as he proceeded, he saw in one palace Krishna was practicing sword fighting on the back of a horse. Immediately he got off from the horse and came and received Narada Muni, made him sit, worshipped him and all that. In another palace he saw Krishna was performing a sacrifice, yajna. Another house he saw he was casually talking with Rukmini. Another palace he went, he saw Krishna swinging with the queen in a jula. Another house he saw Krishna meditating on himself. Another house he saw Krishna giving charity to Brahmanas, like gold and silver and horses and everything. Elephants and cows to the Brahmanas and everything. So in this way, Narada was amazed. Every palace he went, Krishna was performing some dharmic activities. At the last palace, 16,108th palace, Narada saw, Lord told him, he went to various palaces. तो एक बार जब नारद मुनि गए द्वारका नगरी, तो भगवान कृष्ण स्वयं आए महल से बाहर। भगवान ने नारद मुनि का स्वागत किया, उनको अपने ही जो उनका राज सिंहासन था उस पर बैठा के उनके पैर धोए, उनको बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सेवा करी। और बाद में जब नारद मुनि घूम रहे हैं, तो सारे जो 16,108 महल हैं भगवान के, तो उसमें अनेक तरीके के धार्मिक कार्य करते हुए देखा। एक जगह भगवान यज्ञ कर रहे हैं, और दूसरी जगह भगवान ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, और कहीं भगवान अपने जो पत्नियां हैं उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, रुक्मिणी के साथ, सबके साथ झूले पे या कुछ ऐसे भगवान। और कहीं भगवान अपने ऊपर ही चिंतन कर, अपने ऊपर समाधि में है, क्योंकि भगवान ही परमात्मा है, तो भगवान अपने ऊपर ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भगवान के अनेक तरीके से धार्मिक कार्य करते हुए उन्होंने देखा हर जगह। All palaces in Dwaraka. So when he went, at last Narada told Krishna, Krishna told Narada, don't be amazed by my activities in Dwaraka. I am setting an example for all the householders in the world. How they should rise early in the morning, how they should do yajna, how they should do meditation, how they should give charity and all those things. The Lord said, I am the propounder of religious principles, I am the practitioner of religious principles, I am the enforcer of religious principles, he said. So Narada then said, I will go out in the world and tell your glories to everybody. तो अंत में नारद मुनि जब इतना सब देखे, उन्होंने 16,108 महलों में अनेक तरीके के कार्य करे। बाद में वापस जब कृष्ण से मिलने आए, तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला, देखिए ज़्यादा आश्चर्यचकित ना होइए मेरे ये कार्य देख के। मैं एक आदर्श
एक गृहस्थ व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ही सारे धर्मों का प्रतिपादक हूँ, मैं ही सारे धर्मों का उदाहरण भी प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे जीवात्माओं को बता रहा हूँ कि कैसे एक गृहस्थ जीवन आदर्श जीना चाहिए। So here is another picture of Krishna coming to Dwaraka entrance, and then he is blowing the shank. After a long time, he is coming to Dwaraka after the Kurukshetra war got over. He is coming back now. He is blowing the shank, and all the Dwarkavasis get up. When he is blowing the shank, everybody, all Dwarkavasis come to receive him with various processions and bands and music, and everybody wants to give Krishna something. Like, here the band, people playing on band, the dancers are dancing, singers are singing, different people are performing different type of welcome ceremony for receiving their master. तो कृष्ण जब द्वारका नगरी में प्रवेश किए, हस्तिनापुर से निकले और द्वारका में जब प्रवेश किए तो उन्होंने एक अपना जो उनका शंख है बजाया। जब उनका शंख बजाया तुरंत सारे भक्त लोग इतना प्रेम से उनके लिए अनेक तरीके के वाद्य सब लेके ढंग टड़क सब भगवान को प्रेम से स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। कोई नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं। भगवान का स्वागत करने के लिए खूब ऐश्वर्य के साथ सब तैयार थे। In Dwaraka also. So in Dwaraka also people treat Krishna as a king. Just like in Vaikuntha, Lakshmi Narayana are treated like a king. Is it not true? तो जिस तरह वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण को ऐश्वर्य भाव से एक राजा की तरह से सेवा किया जाता है, उसी तरह द्वारका जो धाम है, दिव्य धाम, दिव्य जगत में, उधर भी भगवान को ऐश्वर्य भाव से एक राजा की तरह उनका सेवा किया जाता है। The same manner. And they all are coming and giving gifts to Krishna. Different gifts. Like, some of them, like somebody had a clothes shop, he gave some best best silk cloth, turban for Krishna. Somebody had a gold shop, he gave some gold ring or gold bracelets for Krishna. In this way, everybody wanted to give something to Krishna. All of it's a very, very beautiful chapter. It is first canto, 11th chapter. You will read that. Bhavayanastvam bhavaveshva bhavanah tvameva mata suhrit pati pita tvam sadgururna paramam cha daivatam yasyanu kritino babhuvima. You know what they are saying? Bhavayanastvam. My dear Lord, you made this world so beautiful. Yeah. And when we rise in the morning, immediately we see there is a bright light put up in the sky. Night, when we want to lit up our world, we need millions of bulbs, right? In every home only we have 10 or 20 bulbs. Like once I was flying in a plane, the night time I saw below, the city was lit up with thousands of lakhs and crores of lights. Correct, no? But when Lord wants to give light to the world in the morning, how many lights he sends? One big light he puts down. What is that light? Sunlight. Whole world is lit up by that one light, isn't it? And the night we are going to bed, you send another light, night light. What is the night light? Moonlight. Why it's called night light? Because Krishna knows my jivas are all going to go to sleep now. While sleeping, they want a bright light or a dim light. Because if he sends another sun, then everybody will start working in the computer again. They'll again sit. And when will they get the rest? So he's sending a night light, which is a dim light. Moonlight is very soothing and very mild. Not only that, they are saying that you have given us everything. They are giving us the grains and fruits and cereals and spices and whatnot, everything. And Lord also knows my jivas are having a tendency for enjoying. So they will tend to overeat. So he's given some jadi booty also, some heritage churnam, ginger, pepper and all the jadi booties also. Everything is given. So they are actually thanking him for everything that he has done. And they're saying, Tvameva Mata, Surat Pati Pita, they're saying, you are the mother, you are the father, you are the guru, you are our leader, like that they're saying. Yasyanu Vritya Kritino Bhuvima means, by becoming your follower, our lives have become very auspicious, they're saying. That's how Dwarkavasis is welcome to Krishna. So here also there is a master type of relationship.
तो द्वारका नगरी में भगवान को स्वागत करते समय सिर्फ बैंड बाजा ही नहीं, भगवान को अनेक लोग भेंट दे रहे हैं, अनेक अपने प्रेम से भेंट दे रहे हैं और उनके गुणगान गा रहे हैं कि आपकी वजह से देखिए, हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो एक बड़ा एक आपने सूर्य दिया है जिससे पूरा प्रकाशित हो जाता है जगत। तो भगवान जैसे दिन होता है, भगवान ने सूर्य दिया है जैसे हम सब कार्यशील हो जाएं। अगर हमारे को कार्य करना है बिना सूर्य और सूर्य की किरणों के, तो बहुत सारी लाइट जलानी पड़ेगी। और रात को जब सोना है तो भगवान ने प्रकाश कम कर दिया जिससे लोग सो पाए आराम से, तो मून लाइट दे दिया। ऐसे भगवान सुयोजित कर रहे हैं पूरे जगत को। और उसके अलावा भगवान जड़ी बूटियां और खाने पीने के सब व्यंजन दे रहे हैं। तो इसी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका आराधना करने से हमारा जीवन है सब शुभ हो गया है, तो आप हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे सब लोग स्वागत करते हैं द्वारका में। तो भगवान को एक राजा के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में वाले हैं वो अलग चीज बनाएंगे, इसलिए हम उसको कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ विराम देते हैं। सुंदरम, आपको कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं वैसे, अगर नहीं बोल। ठीक है। तो हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।